तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। जी हाँ, ये गाना है फिल्म बाजीराव मस्तानी का। अब बाजीराव मस्तानी की जोड़ी तो सुपर डुपर हिट साबित होती ही है। रामलीला बाजीराव मस्तानी, और इन दोनों ही फिल्मों में बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक एक्टर रणवीर सिंह और डिंपल क्वीन दीपिका पादुकोण की जोड़ी काफी ज्यादा लाजवाब रही। और आज हम आप सभी को दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बारे में ही बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सुगंध और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के बाजीराव और उनकी मस्तानी के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि लगभग 6 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद रणवीर सिंह और दीपिका ने साल 2018, 14 और 15 नवंबर को इटली के लेक कोमो में 2 रीति रिवाजों से शादी रचाई। इनके फैंस इन दोनों की शादी से बेहद खुश हैं। रणवीर सिंह शादी से पहले भी दीपिका पादुकोण की इतना ख्याल रखते थे कि हर कोई लड़की बस यही चाहती थी कि अगर बॉयफ्रेंड हो तो रणवीर सिंह जैसा हो। लेकिन अब रणवीर सिंह जब दीपिका पादुकोण से शादी रचा चुके हैं, दीपिका उनकी पत्नी बन गई है, तो रणवीर सिंह ने इस बात का खुद ही इनडायरेक्ट वे में ऐलान कर दिया है कि भाई वो अब अपनी पत्नी दीपिका के गुलाम बन चुके हैं। तो फिर बिना देरी किए देखिए क्या कुछ खास है हमारी इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक एक्टर रणवीर सिंह ने साल 2018 यानी कि 14 और 15 नवंबर को इटली के लेक कोमो में अपनी मस्तानी दीपिका पादुकोण से शादी रचाई। 6 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दीपिका और रणवीर ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। रणवीर सिंह दीपिका के कितने बड़े दीवाने हैं ये तो हर कोई जानता है, और हाल ही में रणवीर सिंह ने इस बात का भी खुलासा कर दिया है कि वो वाकई अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण के गुलाम बन चुके हैं। दरअसल हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म गली बॉय के प्रमोशन के दौरान रणवीर सिंह ने खुलेआम सबके सामने कहा कि मैं शादीशुदा हूं, मेरी शादी हो गई है और सारी महिलाएं, सारी लड़कियां मेरी बहन हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि रणवीर सिंह अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण के प्यार में पागल हो चुके हैं और उन्होंने पागल होकर ये बड़ा कदम उठाया है कि अब वो हर एक लड़की को बहन की नजर से देखते हैं। तो फिर आइए देखिए क्या कुछ खास रहा हमारे इस वीडियो में। अब आप सब मेरी बहन है, सबसे खतरी लेबल बोले तो लव जैन है। With a team like this, it must have been really exciting for you to work on this collection. Can you tell me a little bit about what the process was, Dolly? So it was a great process. We worked with Zoya, we worked with the marketing team. We came up with our own designs. It was a great collaboration, and we got a lot from the film. Bhavna, from you, what was your biggest inspiration behind this collection? चंकी पांडे। No. Well, I think the whole inspiration has been the film, Gully Boy. We are all looking forward to it. It is looking amazing, and I can't wait to watch it. Our entire collection has been inspired from there and nowhere else. Thanks. And Nandita, when we have fashion, we have street style, we have music, everything coming together, we have film. How does that kind of work, and how did you use all of those elements in your collection? I think, everybody is influenced by film and fashion, and I think they both complement each other, and music as well is a big influence in today's day and age. And for me personally, I'm a huge hip-hop fan, and so I was very excited about this collaboration. I had a lot of fun. We all did designing this collection, and who better to portray it than Ranveer himself. So we've had a really exciting journey and looking forward to more. I can only imagine. If that was a precursor to what's to follow, so we're all hanging on to the edge of our seats. Zoya, if we can hear from you, what was the ethos of the line that inspired Gully Boy? I think the ethos of it is a kind of mixture of street and rap and hip hop.
which is style, which is individual style, which is self-expression, which is you don't necessarily have to depend on any brand. It's basically how you carry your swag. It's got a lot to do. I mean, there were a lot of influences in terms of graffiti, in terms of poetry, in terms of the written word that were all, sorry, here's the camera. The written word that was all used to design this line, and a lot of athleisure, athletic wear, which is what the artists tend to lean towards. So I think it was a blend of that. And the ethos, I think, is truth and self-expression. How did the collection with Love Gen come about? I mean, how did all of you come together and how did you make this happen, Ritesh? He is the husband of Love Jen. he ain't got no choice. Yeah. No, I think it's actually, no, the thing is Zoya was very clear. I think from the day the designers of the film, which was Arjun and Puramlata, once they designed the film, and then Zoya, I remember for the last 6 months has been telling me that we need to figure out a line with Gully Boy. You know, we have to figure it out. And I think it's, you know, not every film, but this film lends, it's the way it's been designed and the clothes which have been used in the film or inspired, I think lends itself for a merchandise line. And we were lucky to have Lakme let us present the first line. So, yeah, it's exciting times. It is, I mean, I think if we overuse excitement too much, I mean, because everyone is super excited here. And last but not the least, you. Don't do that. Be still our beating hearts if you do. Your look speaks for itself. Can you tell us, how did it feel walking the ramp? Public दिख रहा है क्या? क्या लिखे ला इधर? ओह, public ने verdict दे ला दीदी. भाई हमेशा खुश रहता है. भाई तेरा जॉली है. सबसे हार्ड दीदी, मेरी दीदी डॉली है. भाई ने बाल ड्रॉप किए, नकली रैपरों को पीटा है. सबसे हार्ड दीदी लव जेन की नंदिता है. कभी भी किधर भी तू बीट ड्रॉप कर, मैं बास ड्रॉप करता है. You tend to leave people speechless, don't you? But if you can tell us how it felt walking the ramp, how did it feel different? Because you're working with a cast, you're working with a bunch of people who really work so hard to make the movie come together, the collection come together. Did it feel special for you? I love it. I mean, it's the first time that any one of my movies has had, you know, merchandise done right. You know, it's all about the merch, baby. Markandas. So it feels amazing. I was picking what I wanted to wear last night, and what I'm wearing right now, it just spoke to me instinctively. They were all laid out, and I was like, both hard. Just by instinct. I think today was a unique show. Our film is, you know, very closely connected with music, and music was at the heart of our show today. A unique show, you know, have live performances. A lot of the kids you saw out there are authentic rappers. They've contributed to the music album, they've contributed to the film, to the dialogues, etc. And I think it was a unique show, a unique experience for me, and I'm ever so thankful to the entire team for having me. And on that note, all of us here, I'm sure, wish you the very best. And we hope to see this line, and we're going to definitely go pick it up soon. Thank you so much, and all the best. Public एक बार love Jen के लिए बोलो बहुत hard. ये बार. Thank you. Thank you. If we can have one picture of all of you here, please. One photo of the entire group. ओ public अभी कोर्टयार्ड में आने का, उधर जाके तुम्हारा भाई मचाने वाला है, बोल दिया. देने का कि नहीं? देने का कि नहीं? क्या पब्लिक भाई से मिलेंगे कि नहीं? तुम्हारा भाई आए क्या बालकनी से उतर के स्टॉल पे? भाई को आना चाहिए क्या बालकनी से उतर के स्टॉल में? All right. Before that, one time,
When I say gully, you say boy. Gully, boy, gully. I can't hear you, Mumbai ki public. I can't hear you. When I say gully, you say boy. Gully, gully. When I say gully, you say boy. Gully, gully. When I say both, you say hard. Both, hard. Both, hard. When I say both, you say hard. Both, hard. Both, hard. When I say ek, you say number. Ek, number. Ek, number. When I say Mumbai, you say Mumbai. Mumbai, Mumbai. आएगा 14 फरवरी को देखने का, वैलेंटाइन डे को खूबसूरत बनाने का. Gully boy in the house. Lots and lots of love to the people. I love you. दीदी एक बार गाना बजाओ. वेल दोस्तों, तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम, लेकिन हमें फिलहाल के लिए दे दीजिए इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करने का. पर आप निराश न होइए, बॉलीवुड से जुड़ी हॉट स्पाइसी खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को.